Hi dear students, today I'm here with you to solve exercise 6C. It's question number 6 and G part. First of all, I want to tell you that subscribe to my channel so that you may not miss any of my next video. Okay, now going on to the next step of this question, we need to find value of k because the question is solve the equation. Now, we can solve it like this. 3 over k plus 1 minus 1 over, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. 2 into ब्रैकेट में फिर आ जाएगा k plus 1. Now we take its LCM. Now LCM will be 2 into k plus 1. अगर आपको भूल गया है कि LCM कैसे लेते हैं, you have forgot how to take LCM, so you can watch my previous videos about solution of exercise 6B, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था कि हम algebraic fractions का LCM कैसे लेते हैं. So now हमें क्या करना है कि LCM को साइड पर लिखा स्क्रैप वर्क में और k plus 1 से डिवाइड किया. This cancels out and we get 2. So this 2 will be multiplied with this 3. Then negative sign. Then divide the LCM, which is 2 into k plus 1 by this 2 into k plus 1. We get 1. So when we multiply this 1 with numerator, we get 1 into 1. So here we get 6 minus 1 over 2 into k plus 1 equals 5. Okay, now 6 minus 1 is 5 over 2k plus 1. Here we have 5 और इसके denominator में क्या होगा? When there is no denominator, it means there is 1 in the denominator. So now what we can do is कि पहले हम इस ब्रैकेट को दोबारा से ओपन कर लेते हैं. 2k plus 2 आ जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था. नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाइड 1 with 5 equal to 5 multiplied with 2k plus 2. Now here we get 5 is equal to, when we open this bracket we get 10k plus 10. Now we will simplify it further. Look, this 10 will go to the other side and will be subtracted. So we get minus 10 and 10k is left over here. Now 10 minus 5 is 5 और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों में से बिगर नंबर 10 है और हमेशा बिगर नंबर का साइन आंसर के साथ आएगा. Now this 10 is multiplied with k. So when it goes to the other side, it will be divided. So we get 5 ones are 5 and 5 twos are 10. So the answer is k is equal to minus 1 over 2. Now you may note it down and do not forget to practice it, because always remember, maths with practice. This should be your slogan, that maths with practice. अगर आप practice करेंगे तो ही आप maths में अच्छे होंगे. Now we do question number 7 and its C part, which states S is equal to n over 2 into 2a plus n minus 1 into bracket into d, and we have to make u the subject of the फॉर्मूला जी. अब आपको याद आ गया कि जो हमारा क्वेश्चन 1 था उसमें भी हम सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना रहे थे. सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का क्या मतलब है? ऑलराइट, इन योर बुक द क्वेश्चन इज नॉट दिस, so I will rewrite the statement. You have to make u the subject of the formula, but the equation is S is equal to ut plus half at square. Now this question seems very easy. What you can do is
half at square will go to the other side and it will be subtracted because on this side it was being added. Now ये जो u है हमारे पास t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इस u को यहाँ पर सेपरेट रखना है, सो t will go to the other side and will be divided. तो इसको डिवाइड करने का एक मेथड तो ये भी है कि हम जब t को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करें, ओके वी डू लाइक दिस के पहले हम इस सारे को ब्रैकेट में कर लेते हैं s माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर को, और ये जो t है ये दूसरी साइड पर जाकर जब डिवाइड हुआ तो हमने इसको 1 ओवर t लिख लिया, और फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि s ओवर t ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हाफ ए टी स्क्वेयर ओवर t. ये जो t है ये डिनोमिनेटर में है तो ये s के डिनोमिनेटर में भी आ गया और t स्क्वेयर के नीचे भी उसके डिनोमिनेटर में आ गया. Now this is power 2 and this is 1, so when we will divide it, it means one power will be cancelled out, so we get half a t is equal to u. So this is the answer to your question. इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप t को जब दूसरी साइड पर लेकर गए और वो s के नीचे जाकर भी डिवाइड हो गया, मीन्स आप इस स्टेप को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड. सो इस स्टेप को स्किप करने के बाद आप लिख सकते हैं दैट t गोज टू द अदर साइड और वहां पर वो दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होगा, सो s के नीचे डिनोमिनेटर में भी t आ गया और t स्क्वायर के नीचे भी यहाँ पर t आ गया. ये देखिए लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर आंसर. यू कैन नोट इट डाउन with you. Right, there is one more question like this. Z is equal to y into z minus y over x and we have to make z the subject of the formula. अब आप देख रहे हैं कि z हमारे पास 2 places पर है. Okay, in my previous video too, there was one such question. So we take x to the other side and it is multiplied over there. Now we open this bracket on the right hand side. So we get yz minus, okay, here we have power of y as 1 and here too we have 1. So when y will be multiplied with y, the power will be 2. Alright, now the question has become so easy and the solution is so obvious कि चूंकि हमने z find करना है, so we combine them. Okay, now one thing, when you combine it, what you should do कि जो अगर ये z पॉजिटिव है तो इसको आप यहीं रहने दें, ओके, और दूसरी साइड से जो zx है उसको यहां पर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके, और यहां से क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर विल गो टू द अदर साइड एंड इट विल बी बिकम प्लस. So I can do it in 2 steps as well. मैं इस स्टेप को दोबारा से आपके लिए करती हूँ, but breaking it into 2 steps. 2 steps में मैं दोबारा से इसको करती हूँ ताकि आपको और इसकी अच्छी समझ आ जाए. यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, so when we take it to the other side, it will be added over there. So जब भी हमारे पास इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ जाता है, हमेशा कोशिश करें कि पहले आप उसको दूसरी साइड पर ले जाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें. नाउ ये जो zx है ये हमें यहाँ पर चाहिए, सो व्हेन इट विल गो ओवर देयर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, सो वी टेक z एज कॉमन एंड हियर वी गेट y माइनस x. सो नाउ z को हम यही रहने देते हैं and y minus x will go to the other side and will be divided. So this is your answer. Y square over y minus x. Now we have the last part of this question and this is the last question of this exercise. After this we will do chapter number 2. So
Keep watching to my channel and subscribe it as well so that you may not miss my videos on chapter number 2. Now we do question number 8 and its D part, which is 1 over A plus 1 over B is equal to 1, and here we have to make B the subject of the formula, or you can say subject of the equation. Now to solve this question, what we can do is we take its LCM over here, so it becomes AB. When we divide AB by this A, we get B, so B multiplied by 1 is B, plus when we divide AB by this B, we get A, and when we multiply this A by 1, we get A, and on the other side we have 1. Now I remove these arrows. Okay, I will remove it later on. Now here we get B plus A is equal to AB will go over here and will be multiplied with 1. So we get AB over here, or यहाँ पर B plus A. Now since we need to find the value of B की value हमें चूंकि find करनी है, so हम B वाली terms को एक साथ combine कर लेंगे. So better to take this B to this AB. Why? Because this AB is already positive और ये B positive है, ये यहाँ जाकर negative हो जाएगा. Now we take B as common, so we get here A minus 1. Now this A minus 1 will go to the other side and it will be divided. So this is your answer because B has become the subject of the formula. Thank you so much for staying with me and for liking my videos. See you in the next lecture of second chapter. Bye-bye.